is all because of the various tournaments that happens. Some of the notable tournaments happened in the past for mixed gender cricket tournament was Spruti Cricket League organized by Mandarbai and Rashmi ji. And then recently they even started Gopal Chashak. Gopal is nothing but genesis of Palava, which recently happened. And now we are able to see mixed gender cricket tournament. Victory Cricket Club organized one such event. So interesting to see, and we are able to note many noteworthy cricketers in the women's side. कृपया गोलंदाज 8 runs can come in this over is what I believe. But you know, scoring those 8 runs will be not easy task because Shivi is a very tough contender. And this time played on the leg side for a quick single. And the batting side have opened their account saying jingle jingle. That's a quick single. कृपया स्कोरर आपण कुठे असाल तर आमच्याशी संपर्क साधावा कारण की फलंदाजाचं नाव आम्हाला नाही कळत आहे. री फक्त आहे, रीना. And this time played on the leg side for a single. 1 run declared because the ball has gone out of the court or the turf. So that's a single. Batsman का नाम नयन है. हाँ, batsman का नाम नयन है. स्ट्राइक वरती नयन. आपल्या वैयक्तिक असा पहिला षटकातला चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 3 धावा ठोकल्या गेल्यात. धावसंख्या 3. चौथा चेंडू सामना करतील नयन. यहां पर खेल दिया है, उठाकर खेल दिया. यहां पर एक अवसर बन सकता है और यहां पर पहला विकेट. शिव इज द कैचर. शिवी was the bowler. Shiv and Shivi both combined to get 1 wicket of James, and Warriors strikes. They draw the first blood in this match. One. अभी मैंने आपको जस्ट टोचन दिया था कि फर्स्ट ओवर में 8 रन कैसे होंगे और ये 4 चला गया. मेरे ख्याल से आप जो भी बोल रहे हो वो स्नेहल मैम बहुत जल्दी मतलब उसे तुरंत इनपुट और आउटपुट के हिसाब में वो रिजल्ट मिल रहा है. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चला, एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 8 रन, 8 धावा. परफेक्ट 8. और यहां पर 8 रन करके बहुत ही अच्छा स्टेडी शिप किया है जेंट्स की टीम ने. दीप्ति इज अ बॉलर एंड वहां पर आखिर के गेंद पर हल्का सा मिसफील्ड होता हुआ दिख रहा था. आई थिंक बिकॉज ऑफ विच द बॉल रेस्ड अवे टू द फेंस फॉर 4 एंड स्ट्रेट अवे स्नेहल ओपन नाही. चलो, नवीन वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन आलेत दीप्ती मॅम. सामना करतील रिया. उत्कृष्ट फटका और चेंडू पर बोल्ड कर दिया है. बाद बहुत ही अच्छा डिलीवरी था. स्लाइटली लोअर रखा था बॉल को. बैट्समैन नेम ज्योति इज द न्यू बैट्समैन एंड इट्स द लास्ट विकेट फॉर वुमेन. फ्लाइट डिलीवरी. यहां पर एक अवसर बन सकता है लेकिन शिवी थोड़े से स्टार्ट लेने पर नाकाम रहे. 1 रन मिलता हुआ. स्नेहल मैम स्ट्राइकर. सो जैसे कि हमने देखा था स्ट्रेट अवे स्नेहल ओपन हर अकाउंट विद अ बाउंड्री इन द लास्ट ओवर एंड नाउ विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट कैन शी डू फॉर द कॉज ऑफ जेंट्स. दीप्ति. The next ball has been played well on the leg side and only a single because the mid wicket is there. Very much alert and caution. Only a single. Snehal mixing aggression with caution for a single. Flighted delivery and this time beats the batsman. All ends up. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एक छान छान कटचं प्रदर्शन होतं लेगच्या दिशेने. व्हेरी गुड. अगली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी उठाकर खेलने के प्रयास में 1 रन जरूर मिलेगा. वहां पर शाय एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड बट आई थिंक द बैट्समैन was safely inside the crease, so no question of any appeal for a run out. 5 ball 11 run. Last ball, 1 ball to go.
यहाँ पर नो बॉल का इशारा एंड यहाँ पर स्नेहल वंस अगेन प्लेइंग इट रियली स्मार्ट. No plus one. No +1. These 1-1 runs will really hurt Warriors' chances if they have to see that they had restricted at 4 runs with some good wickets initially in the first over. Before that boundary opened the floodgates of runs for Giants. And that will bring the end of the over. At the end of 2 overs, we are 13 run. 2 षटकाच्या नंतर धावसंख्या झाली आहे 13. 2 षटकाच्या नंतर धावसंख्या 13. तिसरं षटक महिलांचं हे शेवटचं षटक. तृप्ती मॅम वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी तिसरं षटक घेऊन आले. तृप्ती मॅम सामना करतील ज्योती मॅम. पहिला गेम लेगच्या दिशेने हा फटका. 1 धाव पूर्ण. धावसंख्यामध्ये 1 ने 4. रंगा जी, आपको नहीं लगता है कि ये रेगुलर के लाइफ से महिला के लिए कुछ अलग है, तो एक रिफ्रेशमेंट इन्हें मिल रहा है, ऐसे आपको नहीं लग रहा है? देखिए इनके चेहरे के ऊपर वो उत्साह देखिए. कल से वही काम करना है बट आज का दिन अलग है, तो आज का दिन उन्हें एंजॉय करना है, राइट? And this time it's been hit really well over the long on region. And Rashmi Ji was the fielder. Or some slight comedy of errors we can see there. Before Rashmi could field the ball, the batsmen have crossed over for 2 runs. लॉंगॉनच्या दिशेने झालेल्या गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे या 2 धावा एक्स्ट्रा धावा मिळाल्या आहेत. याची आपण सगळ्यांनी नोंद घ्या. बहुत ही अच्छा प्रहार करते हुए स्नेहल, जैसे हम बोल रहे थे, उत्कृष्ट फलंदाजी स्नेहल यांच्या मार्फत एक मजबूत तगडा फटका. she's mixing aggression with caution. This time hits on the long off fence and well fielded by Rashmi. It seems to be Rashmi Singh, the fielder, patrolling the long on region. आपने देखा वो मैम के पहले ही हेड कैप उसका ऑरेंज है. इसका मतलब यहां का मैन ऑफ द सीरीज लेके जाने की सोच से आए हुए हैं. लेगच्या दिशेने चेंडू और यहां पर खेल दिया है 1 रन के लिए. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखते हुए. एकदम चुस्त और दुरुस्त बल्लेबाजी का मुआयना दिखता हुआ. This time beats the batswoman. All ends up this time. Tried for a big swing. Last ball 18 रन हो चुके हैं. जैसे हम प्रेडिक्शन करे थे 20 रन होगा, तो वो लगभग आसपास आता हुआ. This time hits it on the offside. What a powerful batting performance by Snehal. And can we see it as a wicket? No, the leg umpire dismisses any claims for a run out, and the scoreboard reaches 20. And this is a safe haven for women's cricket. From here, the men can take the scoreboard ahead. 2 रन निकलता हुआ इस गेंद पर. बहुत ही अच्छा बैटिंग का परफॉर्मेंस स्नेहल द्वारा. Giants team really owes something big for Snehal. The way she started her account by hitting a boundary on the offside in the very first over of Shivi's bowling, and then kept it accelerating the score in the overs after over, and finally taking them to a safe score of 20 runs. Now the men will start their account. We'll have to see what could be the safe score here in this Camp Nou turf. क्या लगता है आपको प्रशांत भाई? मेरे ख्याल से ये जो फोर्थ ओवर जो अभी होने जा रहा है उसमें मेरे हिसाब से तो 8 रन तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं. डिपेंड्स है बॉलर के ऊपर. जैसे आप देख रहे हो कि ये कैप्टन का जो बॉल है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे है कि अगर मारोगे तो जाएगा भी, पर अगर लूज शॉट लगेगा तो कैच भी हो सकता है. तो मुझे लगता है 8 रन तो इस ओव्हर में आने चाहिए. ओके, ऑल द बेस्ट. चौथ्या षटकातलं वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन येत आहेत. त्यामुळे हे 4थं षटक आहे. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी जेंट्सच्या प्रत्येक षटकातला जो शेवटचा चेंडू आहे त्या चेंडूवरती ज्या धावा होणार त्या डबल होणार शेवटच्या चेंडूवरच्या. परंतु जर शेवटच्या चेंडूवरती विकेट पण गेला तर -5 होतील. याची कृपया आपण दोघांनी नोंद घ्या. त्याचप्रमाणे VCC क्रिकेट क्लबचे सर्वेसर्वा जय राज यांनी असं सांगितलंय की आपल्या ह्या आजच्या टुर्नामेंटमध्ये सेमीफायनल आणि क्वार्टर फायनलचा काही गेम नसणार. ज्या 2 टीम टेबल टॉपर असणार त्याच डायरेक्ट फायनल खेळणार आहेत. कृपया याची नोंद घ्या. थँक्यू. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी.
डॉट बॉल. खेळाडूच्या चेहऱ्यावरचा ॲटिट्यूड बघा, बॉलिंग बघा, ती लय बघा. पुन्हा एकदा ऑफच्या दिशेने 2 चेंडू 1 धाव. उत्कृष्ट गोलंदाजी आतापर्यंत. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करताना जो क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करतो बॉलिंग प्रमाणे त्याला खरोखरच ती लय सुचलेली असते की तो खेळाडू कुठे खेळेल. चला पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. तिसरा चेंडू. और जो गेंदबाजी कर रहे हैं वही कैप्टन है. वाईड. और जो गेंद पता नाही यांचे कर्णधार. ओके, वही तुम्ही कैप्टन. बरोबर म्हणाल की तेच कर्णधार आहेत. तो कैप्टन के बॉल से बॉलिंग करे या गुड शॉट से. कैप्टन के बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं. नाइस लाइन, सुपर लाइन. Well, that's really good exhibition of good bowling, keeping it really tight, line and length. Again, no ball. ऑफच्या दिशेनेचा फटका. 1 no +1. Extras के रूप पर 1 रन अतिरिक्त रन आता हुआ. Meanwhile, everything going really safe and steady for Giants. And as Prashant sir said, last ball will be eventful. If a wicket goes or a run comes, you will be seeing some multiplication on either side. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे दादा. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. चौथ्या षटकातला 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या 25. नो दंडित केला आहे. एक अवांतर धाव 9च्या स्वरूपामध्ये. धावसंख्या 27. और यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है. कैप्टन स्ट्राइक्स एंड दैट वाज a gem of a delivery. Chafa, I would say. Batsman went in for a huge slog but was beaten all ends up and is castled. And with that, I think this was the last ball of the over. So as we see here, a wicket is gone and that will result into minus. Oh, sorry, it was a 5th ball, I think. Now it's been the last ball. कुठेतरी पंचाला एक संधी आहे, कुठेतरी कर्णधारला संधी आहे की माझ्या शेवटच्या चेंडूवरती जर गडी बाद झाला तर -5 होतील. ही संधी ह्या गोलंदाजाला आहे, त्याचा त्याने पूर्णपूर फायदा घ्यावा हीच इच्छा. ऑल द बेस्ट. लेगच्या दिशेने टोळ चेंडू जेल होता राहिलं आणि 1 धावेने भर. धावसंख्या झाली 28. 4 षटकाच्या नंतर धावसंख्या झाली 28. 28. अच्छा, दो मिलके भी 28 ही हो रहा है स्कोर. एंड नाउ कम्स इन द मेन मैन गिरीश व्यास, the best bowler in Palava Lakeshore Circuit, the owner and the creator, the Brahmaji of CRS Cricket Revolutionary Society. आताच बघा गोलंदाजीला सुरुवात नाही झाली पण योगेश एंटरप्राइजेस यांच्याकडून जर योजना एंटरप्राइजेस यांच्याकडून आताच पारितोषिक आलं. जर 3 गडी बाद केले कंटिन्युअसली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं गिरीश यांच्यासाठी. पहिला चेंडू ऑफच्या दिशेने डोलून ही 1 धाव. वैयक्तिक असं षटकातला हे पहिलं षटक आणि 5व्या षटकातला हा पहिला चेंडू 1 धाव पूर्ण. और यहां पर पहली गेंद पर 1 रन. अगली गेंद देखना होगा. बहुत ही अच्छा बॉल यहां पर और बहुत ही अच्छा प्रयास गिरीश व्यास द्वारा. हालांकि थोड़े से चूक गए बॉल कैच करने पर. द एफर्ट वाज रियली ब्रिलियंट बाय गिरीश व्यास. The batsman not able to open his arms, and that should be a biggest credit that we should give to the bowler this time. On the outside, is it a catch? No, the ball slips away from the hands of the fielder on the long off region. The fielder is none other than Rashmi Singh ji, and a chance for a wicket goes down. Meanwhile, the batsmen have crossed in. 1 रन के लिए अगली गेंद उठाकर खेल दिया है और बॉल वहां पर अटक गया है. देखना होगा वहां पर रूफ जो है वो भी फील्डिंग कर रही है गिरीश व्यास जी के बॉलिंग पर. रूफ बोल रही है यहां पर क्रिकेट टर्फ की कि हमें भी फील्डिंग करना है, हमें भी अवसर दीजिए. 32 is the score. The next ball and this time hits high and ends up, but no, it cannot cross the fielder and Shiv is the man straight down the ground, takes a good catch, and that will bring the end of a fine innings from a batsman. And Girish Vyas, the bowler, has struck
He has struck terror in the minds of Jane Stream. Aditya is a new batsman. Girish Vyas, fresh in the mood and the spirit after taking that wicket. Can we see some more repeat performance? Last ball, mind you, this ball, if you hit a run, you will get 2 runs. If you lose a wicket, it will result into -5. So act accordingly. Act responsibly. This time, it's clean ball. Girish Vyas strikes. -5. And that will send down the death knell to Jent's team. All the hard work and efforts put in the last few overs by the players of the team, they could lose 5 runs because of this delivery. They have lost a wicket. Girish Vyas strikes terror again. 2 back-to-back wickets and sends Jent's team immediately on the back foot. Brilliant, brilliant performance. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर. और इसी के साथ 2 ओव्हर. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 6 षटकांचे सामने, त्याच्यातलं हे शेवटचं षटक, अंतिम षटक घेऊन येत आहेत सूरज तिवारी. वैयक्तिक सूरज शेट्टी. तिवारी तो हम नाम जोड़ देते हैं सब प्यार से. लेकिन जितने भी तिवारी लोग हैं उन लोग हमको फिर बाद में हमें ढूंढते हैं एक्चुअली किधर है इसको थोडा मिळते हैं. चलो ठीक आहे, सामन्याकडे वळूया. वैयक्तिक असा पहिला आणि संघासाठी शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत सूरज. खुर्च्याचा ऑफच्या दिसण्याचा बॉल आणि पंचांनी हा वाईड दंडित केला. एक अवांतर धावेने भर. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना. जैसे कि हम देख रहे थे गिरीश जी ने जो बॉलिंग किया था लास्ट ओवर में, ब्रिलियंट. The last wicket bowled, clean bowled, was really amazing. This time Suraj beats the batsman. Batsman ला बोपलाही फोडता नाही आला या वेळेमध्ये. Suraj Shetty. This time mistimes the ball and they have crossed for 2 runs, but we have to see what's the decision of the umpire and the organizer, whether it's a 1 declare. Declare it's no +1, so 2 runs will come on this particular ball. Batsman का नाम क्या है? कुणाल. और ये नॉन स्ट्राइकर? Yash and Kunal, the 2 players in the middle right now, doing the repair damage activity for James. This time hits on the top for a single. The ball traveled, but at the end moment, और यहां पर एक अपील होता हुआ गिरीश व्यास. He is just making things happen everywhere. Is making things happen everywhere. That was a big appeal for a run out by Girish Vyas, and the leg umpires both consulting between themselves and the main umpire and the committee. They have decided to call it as a dead delivery after the runs has been scored. Dead movement, I would say, not a dead delivery, because the ball was really legitimate and the runs have been also. Meanwhile, Suraj to Yash, 31 is the score. Mind you, this is the last over. And this time went in for a big slog sweep and only a single, and that will bring Kunal, the man on strike. He's trying his real best to take Jains forward. White ball, अतिरिक्त रनों पर 1 रन और बढ़ता हुआ. Well, the next ball takes on the full, but this time it won't. The ball and the batsman both won't escape the clutches of Girish, and Girish Vyas doing his magic as a wicket keeper, as if with the ball he was not. He was really relentless with the ball, and now with the wicket keeping skills as well. Girish Vyas takes a good run out and 2 balls to go. 2 balls to go. Suraj Shetty, what a brilliant performance in this game so far. Really able to see, beating the batsman, not allowing them to open up the arms. That's a good skill set that he's been deploying this time. It's a no ball call by the leg umpire. So an extras will come, and that will bring back Kunal on strike.
So the next ball, Suraj Shetty. उठाकर खेल दिया, यहां पर कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन लॉन्ग ऑफ दिशा पर। बहुत ही अच्छा प्रहार यहां पर कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ। To some extent, he is doing the repair damage caused by that -5. First 6 of this tournament, according to our sources. And this time, the next ball is being belted on the offside, and it's a back-to-back sixes. Kunal, 6 + 6, 12 runs in a one ball. Kunal is saying, "No panga sadenal. I have arrived, and my name is Kunal." Oh, he's making his message loud and clear. What a brilliant shot! 2 back-to-back balls in the last ball. That I think might hurt Warriors, and Warriors will have to start their innings sensibly. आपण दोन्ही इनिंगला नवीन बॉल यूज करतो ते पण सांगा. बोथ इनिंग न्यू बॉल. 55 का टारगेट है। 59 दिखा रहा है, बट उसको अभी नेक्स्ट इनिंग होगा तो +5 ऐड होके आएगा, तो अभी 59 - 5 करने के 54 होगा, तो 55 का टारगेट है, 59 का टारगेट, 54 का टारगेट आएगा। 53 नहीं है ना, 53 नहीं, 54 का टारगेट आएगा। 54 is the target, is what we have come to know with the help of that 2 big sixes. I think the scoreboard really marshaled the way. अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है actually. And as I said before, the 20 runs coming from women's will be very, very crucial. So that's what they will have to concentrate. 3 overs is yours. Play safely, get a score of 15 to 20, and then let the boys score the remaining. I think that should be the template. And anything beyond 20 is a really big booster for any side. So I think that should be the ideal strategy. Because suppose if you score anything on around 10 run or less than that, then the entire pressure will mount on the boys to score the remaining runs in the allotted 3 overs. Because in this tournament, चला 3 overs. कृपया पंचांनी सामना लोगों को सुरुवात करावी. पंचराज सामना लोगों को सुरुवात करावी. यहाँ पर 6 ओवर पर 3 ओवर खेले जाएंगे for women and 3 overs will be for men. Like that. So what is your take, प्रशांत भाई? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से स्कोर है और जिस हिसाब से ये दोनों बैट्समैन दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 7 रन के ऊपर पहले ओवर में प्रेडिक्शन. मैं ऐसे सोच रहा हूं कि 7 रन के आसपास ही पहले ओवर में हो सकते हैं. चला Around वैयक्तिक असा पहिला षटकातला हे षटकातला स्वतःचा वैयक्तिक असा पहिला षटक घेऊन आले स्नेहल सामना करतील. I think around 9 runs is what I'm predicting. 9 to 10 runs the first over. Let's hope. आपने 9 रन बोला, मैंने 7 रन बोला. चलो देखते हैं किसका प्रेडिक्शन कहां तक चला जाता है. चलो ठीक आहे, सामन्याला सुरुवात करूया. वैयक्तिक असं पहिला आणि संघासाठी पहिलं षटक घेऊन येतात स्नेहल. सामना करतील रश्मी मॅम. आणि कुठेतरी डालमोल आणि उत्कृष्ट अशी ही धाव, एक चुरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. पंचांनी कृपया आपला निर्णय कळवावा. सपोर्ट डॉट बॉल. I think the player has needs some kind of medical assistance, Rashmi ji. So I would suggest support staff to rush for the aid of the same. If we can get some first aid or something like that. Because there was a याचप्रमाणे एक विनंती आहे की टायटन टीमचे कर्णधार त्याचप्रमाणे योद्धा टीमचे कर्णधार यानंतर होणारा सामना आपण कुठे असाल तर कृपया माईकशी संपर्क साधा. आपला नाणेफेकीचा कौल पूर्ण करायचा आहे. आपण कुठे असाल तर योद्धाचे कर्णधार त्याचप्रमाणे टायटन टीमचे कर्णधार आपल्या दोघांना विनंती आहे माईकशी संपर्क साधावा. आपला नाणेफेकीचा कौल पूर्ण करायचा आहे. चला पुन्हा एकदा. मी पडले, मी उठले, परंतु माझा संघ मला विजयी करायचा आहे. त्यासाठी माझी घोर दौड. रश्मी मॅम कमान. फटका, उत्कृष्ट फटका 4 रन के लिए 9+4. and the रंगाजी देखा अभी मैंने बोला मी पडले पण मी उठले आणि मी काहीतरी करून दाखवलं. स्कोर 5 हो चुका है. 9 रन दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं अभी. चला पुन्हा एकदा स्नेहल सामना करतील रश्मी मॅम.
उत्कृष्ट फटका, कार्पेट शॉट आणि पुन्हा एकदा रनच्या मागे 4 धावा और यहां पर प्रेडिक्शन तीसरे बॉल पर खरा उतरता हुआ। रंगा जी इन्होंने दिखा दिया कि बाउंड्री पे मैं जो ऑरेंज कलर की कैप पहन के क्यों खड़ी थी, इसका वो सिंपल एग्जांपल है। एंड रश्मि जी इज अ वेरी नोन क्रिकेटर, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है ये, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं, जाने जाते हैं ये बल्लेबाजी अपने उम्दा बल्लेबाजी के लिए। मॅम 1 मिनिट, अंपायर 1 मिनिट, तुमच्यासाठी एक विनंती आहे, तुम्हाला आत्ताच ऑफर आली आहे, एक छगडा मारला तुम्ही तर तुम्हाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे योजना एंटरप्राइज यांच्याकडून। थँक्यू सर, थँक्यू थँक्यू। टोको थाली, बहुत ही अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस, 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज, वन द ब्लेड ऑफ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेला था, ऑफ साइड की दिशा पर बॉल ट्रैवल नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, वरना और एक थी। रंगा जी ये एमआई की टीम है तो इनकी नीता अंबानी कहीं बैठी होगी माला लेके। और शिवी वहां पर रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए उत्कृष्ट गोलंदाजी स्नेहल यांच्या मार्फत एक निर्धाव चेंडू धाव संख्येमध्ये। इसने बनाया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसने 10 रन होता हुआ यहां पर लेग साइड पर खेल दिया है डॉट बॉल के लिए, एंड दैट विल ब्रिंग द एंड ऑफ द ओवर। 10 runs is the score and the prediction is spot on, 9 or 10 runs is what was predicted। सुपर रंगा जी आज का दिन आपका प्रेडिक्शन सही जा रहा है, शाम को आपको लेके मुझे बैठना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को आपकी जरूरत है और पंजाब को बाहर निकल के मुंबई को आगे लेके जाना है, राइट। यहां पर 10 रन होता हुआ स्कोर बोर्ड, 54 इज द टारगेट एंड 10 runs already scored, 5 overs, 44 runs to win। चला पुन्हा एकदा सामन्यात येऊ। वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येतात रिया मॅम। रिया मैम टू रश्मि जी। रश्मि मैम आपको अभी भी आपका ऑफर चल रहा है, अगर आप 6 मारोगे तो आपको 1000 का योजना एंटरप्राइज की तरफ से आपको पारितोषिक या गिफ्ट दिया जाएगा। वहां पर ऑफ साइड पर खेल दिया है बहुत ही अच्छा रक्षात्मक तरीके से, 1 रन के लिए मिड ऑफ दिशा पर खेल दिया था रश्मि जी ने। उत्कृष्ट गोलंदाजी, 1 धाव संख्येमध्ये भर। अगली गेंद शिवी मॅम उत्कृष्ट असा फटका लांबांच्या दिशेने आणि और ये 4 हो गया यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस। सो शिवी टेक्स अ लीव फ्रॉम द फेदर ऑफ रश्मि सिंह एंड हिट्स one on the offside for 4, long off fence, waiting to welcome Shivi for that boundary, brilliant shot। अगली गेंद फ्लाइट डिलीवरी एंड दिस टाइम कैच हाथ से छूटता हुआ। कुठेतरी हार्डवर्क करताना रिया मॅम, कुठेतरी हार्डवर्क करताना आपल्या संघाला कुठेतरी या धाव संख्या यहां पर स्कोर बोर्ड बरकरार चलता हुआ। उत्कृष्ट ऑफर अजूनही चालू आहे, 1 छगडा मारला 1000 रुपीज योजना एंटरप्राइजेस। और यहां पर डॉट बॉल, बहुत ही अच्छा कमबैक। Last ball, 1 ball to go. 17 is the score this time, and this time it's spanked, but it's caught at the mid-wicket region. And this time, Rashmi Singh will walk back to the pavilion, but not before she has 2 over के समाप्ति पर। Bowler name, please. Bowler name. Jyoti. Jyoti ji will be the bowler, and Shivi, the batswoman, the very first ball. We are in the 3rd over of women's cricket. This time. इन्हें रन चेस करना है, क्या लग रहा है आपको क्या होगा? यहां पर थोड़ा टाइट माहौल बनता हुआ, लाइक आफ्टर दैट फर्स्ट ओवर जैन टीम ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, तो ये ओवर में 5 रन्स भी मिला तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि विकेट्स गिर रहा है यहां पर, एंड दे विल वेरी सून बी ऑल डाउन इफ दे लॉस अनदर विकेट आई बिलीव। तो रक्षात्मक तरीके से थोड़ा खेलना होगा, एक रन ऐसा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। यहां पर बैकफुट पर पंच किया है, -5, you score a run, it will be into 2,
And this time plays it straight and a single. Wicket to Warrior. And I think the Giants were jubilant and they were celebrating that they have got a wicket on the last ball. But the umpire says not to be the case. Umpire says not to be the case. What a rhyming. ए राज कुठे गेला राज इकडे आता बघ काय झालंय 3 माहिती का 1 रन काढलाय हा? आणि आउट पण झालाय -4 कसं 1 रन डबल होणार ना मग 2 होणार शेवटचं षटक आणि शेवटचं षटक घेऊन आलेत विजय. वैयक्तिक असं पहिलं आणि संघासाठी शेवटचं षटक घेऊन आलेत विजय. आणि 6 चेंडूंमध्ये धावांची आवश्यकता आहे हे आपल्याला थोड्याच वेळात कळवलं जाईल. विक्ट्री क्रिकेट क्लब आयोजित हे अंडरआर्मचे सामने आपण सगळे इकडे वेळात वेळ काढून इथे खेळायला आलात आणि तुमच्या सगळ्यांचं मनोरंजन होतंय. या सगळ्यासाठी खूप खूप अभिनंदन. या विक्ट्री क्रिकेट क्लबचे जे ऑर्गनायझर आहे त्यांचं आणि त्यांच्या सकट त्या तुमच्या सर्वांचं. कृपया 2 मिनिटं द्या पंच. 1000 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. 2 बॉल 19. कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. 2 बॉल 19. 1 6. पंच कृपया मागून जर कोण बॉलिंग टाकताना बोलत असेल तर आपण नो द्या. कारण की वेळेचा विलंब होतोय.